May I come in, sir? Yes, please. Please sit down. Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning. What's your name? Sir, Madan Gupta. Mr. Madan Gupta, kindly sit relaxed. Yes, Let sir. your back touch the back of the chair. Yes, sir. पीछे रहिए थोड़ा. Yes, sir. आराम से बैठिए. Okay. शरीर को रिलैक्स करिए. Okay, sir. टेंशन मत करिए. Yes, sir. We're just going to have a talk with you. Yes. Tell us something about yourself. So I belongs to Gwalior, Madhya Pradesh. I have done my schooling from Gwalior, and after that I have completed my graduation from Sri Govindram Seksariya Institute of Technology and Science, Indore in 2020. And since then I am preparing for engineering services exam. And apart from academics, I also watch and play cricket, and I also practice meditation, and I like to do cooking sometimes. What kind of a meditation you are doing? Sir, I practice basically focused type of meditation, in which I focused on breathe, close my eyes and breathe, inhale, exhale. From where have you learned this? So one of my relatives, he is doing masters and graduation in yoga and meditation. So when I visited him, then I learned from him and I started. Have you heard of Vipassana meditation? Vipassana meditation. Yes, sir. Can you tell me what it is? So I don't know about detail of it, but it's a form of meditation, Vipassana meditation, Hatha meditation, and Jana meditation. These are all forms of meditation. Tell me now that you are a civil engineer. Yes, sir. And I have bought a plot. Let us say, Yes, sir. suppose I bought a plot in Noida, Yes, in a sector of 500 square yards. Yes, sir. And I request you to come and build a house for me. Yes, sir. What all factors you will take into account while designing and constructing the house? Yes, sir. So basically, first of all, we will check the plan and we will design for plan. So according to the local authority guidelines or state guidelines, whatever is the ratio of FAR ratio they have suggested. So based on that FAR ratio, we will plan in how much area we can construct. So based on that, we will plan only in that area, and the remaining area will be left as open or as gardening or parking space. And then we will go for design plan and elevation. So we will construct. So the design plan, what all you will take into account? Sir, basically, what's the length and width of that plan, direction, the facing of that plot, the locality, markets available, nearby residence society available. So based on that, we will plan then what is the main purpose of that owner. So how much space he required, how much room he requires. Okay. These are the things yes, sir. you will keep into account. Yes, sir. Anything more or no? That's enough. That will help you. Yes. Yes, sir. First, after that planning innovation, we will go for site inspections and material testing and that. Correct. Yes, sir. What's the material available at What is the latest technology in civil engineering, yes, sir, which has come to the world now in the last 1 year? Sir, Any technology which is new and which people are adopting? sir, 3D printing, 3D printing, 3D construction, house making. How does it work? Sir, it's basically it's a large, we can say large form of printer, 3D printer, in which layer by layer construction is done. No, printer will only give you a printout. How does the building get constructed? Yes, sir. So it's basically a machine type. Then the machines are connected to the computer. So Have you read today's newspaper? No, sir. You don't read newspaper at Sir, all? yes, sir. I read, but I haven't read today's newspaper. So which newspaper you normally read? Sir, Dainik Bhaskar. Dainik Bhaskar. Yes, sir. Yesterday's newspaper you read? Anyway, Sir, I forgot. what is G20? So it's a group of 20 nations, the major 20 countries of the world, which holds about 80% of the world trade and 75% of the GDP of the country world. Can you remember some of the countries? Can you mention Yes, some sir. of the countries? Sir, India, USA, Britain, Canada, France, Germany, and China, and France, Italy. I remember. So these are all, and I remember these all. So what is the purpose of this meeting there?
Yes, sir. Sir, the main focus of this meeting that is going to hold on 16 or 17, the main focus is to about climate change issue. That is the present major concern. Climate change. Yes, sir. Climate change and global warming. No, I thought climate change is being discussed in Egypt now these days. Not there. Yes, sir. Yes, sir. It's also discussed there. So, but I've read in the article that climate change issue and economic development, IT and health, these are the major focus of it. What were your favorite subjects? Sir, I mean, interest in the civil engineering. yes, sir. Sir, RCC and sir, soil mechanics. So most of the people are coming with the same background of RCC and Yes, soil sir. mechanics. Yes, sir. Can you identify soil? Which one you feel good for construction? Which one is not good? Suppose he has purchased a plot of land. Yes, sir. It is filled up with some soil. Yes, sir. Now, by touching it, seeing it, can you, or by moving on it, Yes, can sir. you have a feel if this good soil is good for construction? I mean, to make a house, or it needs to be thrown out, filled with good soil? Yes, sir. How do you feel? So basically, first by observing the size of that material that available. It's a coarse grain or fine grain soil. Size कैसे पता लगेगा? So we can see that. You tell me about touch. आई से देख रहे हैं, Yes, sir. हाथ से टच कर रहे हैं, पैर से चल रहे हैं. Yes, sir. इन्हीं एस्पेक्ट आपके पास और कुछ है नहीं. Yes, sir. How do you So feel? from eyes, we can see its color. It's basically a alluvial soil or black cotton soil. If it's black cotton soil, then we can see that its color is black. If it's a red or alluvial soil, then it's will be a lightish yellowish or reddish color, which is good or strength soil. And first by taking the sample, we can feel that if what is about the moisture content and strength. If we make its ball like, then if it's crushing easily, then its strength is If low. it is Crushing, if we make the small balls of it, and if it crushes easily, crushes. yes, sir. Okay. And then its strength is less. And third, by observing the if we walk on that, if it's compressing, then it's a compressive strength. We can see that compressive strength is low. Yes, sir. If it is crushes Yes, sir. easily, Yes, you mean sir. to say if it is a sandy soil, Yes, sir. then for it is not good. Yeah, yes, sir. Clay soil is good. Yes, sir. So if it's a plastic soil, then it crushes easily. Plastic soil crushes easily. Yes, sir. So basically, we do the plastic limit test, in which we make if it's a lab test, we do mixed thread of size 3 mm sample thread. Then it crushes easily, then it's a plastic soil. So basically, it's just a lab test, but we can do in the field by taking the sample and make some small balls. आप हाँ मध्य प्रदेश के रहने वाले. Yes, sir. मध्य प्रदेश में जनरली ब्लैक कॉटन सॉइल का प्रॉब्लम है. Sir, that is in Malwa region, Aga Malwa Ujjain region. Okay. Yes, sir. And sir, in my region, MP Gwalior region, Gwalior Bandwana region, this is alluvial soil, sir, Chambal soil. Chamba soil. If So you basically Chambal region, so it's a alluvial soil, sir. the Chamba soil. Sir, sand, Chambal sand. Chamba Yes, sir, Chambal sand, alluvial soil, sir. Okay, alluvial soil. Yes, sir. Is it good for construction? Or Yes, not? sir. But it will be. You can't make a lump out of it. Can you make a lump out of it? Ball. Is it easy? No. Well, no, sir, I have no idea. Can you make a ball out of it? I mean, if you have that Yes, sir. some. Yes, sir. If it's a clay or mixture of clay, then we can make it. You know better what kind of soil it is. Yes, sir. It's a alluvial soil, but not sir, clay content is very less there. Very less. Yes, sir. So you can make a ball or not? Yes, sir. We can make, but not that. If it's a basically if it's a clay or clay is there, then the balls of clay can be made easily. But that soft soil or any other soil, the ball cannot be made that easily. Okay. Clay has a better drainage or sand has a better drainage? Sir, sand. Sand. Yes, sir. So basically the void size or pore size of sand is more, so the permeability of sand is more. So drainage is better in sand. In a canal, Yes, sir. there is flow of water. Yes, sir. The velocity of water, Yes, sir. where is more? So basically in lined canal, if it's a stone line or RCC lining or in canal, then the friction will be less and the seepage loss will be less, so velocity will be more. If it is unlined canal, Yes, sir. the cross section of the canal is quite wide. Yes, sir. The velocity of water will be more where in that cross section?
So basically, about center, basically at the boundary, he will get the boundary resistance. So velocity will not be more at boundary, but it will be more near about center and not at the top surface. The maximum velocity obtained at somewhat little depth from top surface. Fazlur, please. Okay. Yes, sir. So, have you heard about elevation and altitude in surveying? Yes, sir. So, what is the difference? Because both are referred as the measurement of height. So, what is the difference between elevation and altitude? Yes, sir. So altitude is basically if we go from altitude is measured from mean sea level. Okay. So yes, sir. The location or the elevation height measured from mean sea level of any city, that is the elevation altitude, sir. Okay. And elevation is basically if from the ground surface, from any reference point, what is the height of any object, that is the elevation. Okay. So, what is considered as mean sea level of India? Yes, sir. So Mumbai high. That is the mean sea So level. Mumbai is considered as Yes, mean sir. sea level. Now, please tell me that if the sea level of Mumbai is constant, today, tomorrow, yesterday, 2 months before, is the sea level of Mumbai is constant or it is fluctuating depending on rain or gravitation force? Yes, sir. Based on the rainfall pattern and based on the It is changing. Yes, sir. Gravitational force of moon, so it is obviously changing. changes. Sir. Okay. So that thing which is changing, Yes, sir. how we have taken it as a datum for Datum, measuring the altitude? Okay, so basically for that to consider that fluctuation, a 19-year average is taken as mean sea level. Okay, good, excellent. Now, what is V poles? B poles, sir. Yes, basically these are constructed in retaining walls or the hilly areas to pass off the water to dissipate the excess water pressure so that it not develop. We provide B poles. in the Okay. retaining wall. So, have you heard about CD test, consolidation drainage test, and UU test? Yes, sir. I have heard of. Okay, so what is the difference between them and where we use them? So basically CD is a consolidated drain test. So in which in the first stage and second stage we have allowed the drainage. Okay. So yes, sir. So it's a basically a long time taking test. So if we do perform this test for long time analysis of the construction. While in EU test, unconsolidated and drain test. So we do not allow the drainage in both stages. So it's a fast test. So we do for short term analysis or fast construction of project. If any construction is going on during the construction phase, what excess water pressure will develop on that. So for which we do EU test. Okay. So when your college is constructed, roughly or So if college? you're- Yes, your college from where Yes, you sir. have So done established in 1952. 1952. Yes, Okay. So now today, Yes, sir. that is 2022, Yes. we want to find the C and phi value, cohesion and friction and angle value. Yes, sir. So what type of testing should be preferred there in your college? Yes, sir. College soil of that Yes. level. So we can do such CD test. Okay, so Yes, sir. where UU test should be done then? In which site or in which practical Yes, sir. aspects? So U test is basically done in retaining wall construction or the embankment construction, which is a fast construction. So Okay. to measure the water pressure, we do EU test. Okay, okay. Okay, sir. Madan Gupta ji, बहुत बढ़िया। Yes. ये what is the normal life of RCC structure you expect? So based on the construction, based on the area, based on the locality or exposure condition, so it may vary slightly, but it's around 30 to 50 years. Sir. Around? So 40 to 50 years, and 40 to sometimes 50. if exposure condition is high, then it may around 30 to 35 years. Sir. Okay. So how do you propose to, how can you improve the life of the RCC structure? What are the measures you can take to improve the life of the structure? Yes, sir. So if it's a moderate or severe exposure condition, then we can select the best type of, we can change the type of cement we have used. Generally in normal areas we do OPC cement, sir. But if it's a high rainfall area, then we can do sulfate resisting cement or acid resisting cement. So basically this acid resistance of the cement is high, so chemical action will be less, and we can add some special chemicals to avoid in ground level construction to avoid the attack of sulfur, sir. And we can use, if it's possible, we can use steel construction, sir. But for RCC construction, the thickness of plaster and the outer thickness, we have to provide more thickness. Why?
Sir, it's on the direct contact with rain and water and the atmospheric agency. So the main exposure surface area is outer surface. That is the case in the case of pre-stressed concrete also. Pre-stressed concrete. That is the similar case. Yes, sir. What is so special about RCC? Sir, PCC. What is so special about RCC that you provide more cover? In PSC also you will provide more cover. Yes, sir. Yes, sir. Why this life of RCC structure is only 30 to 50 years? And So basically in RCC construction, the whole construction we are doing at the site, and the that is still construction will also you do at site. Most of the construction is done at site only. yes. So basically in steel construction, the members we are using are already prefabricated in plants. We are only joining them. We are the major work on steel construction is joining the members. They are already. What is the life of a PSC construction you expect? Life of RCC was 30 to 50. Yes, sir. And pre-stressed concrete, what is the life you expect? So I have no exact data, but around 60 to 70 years, sir. Why life is more? So basically, pre-stressed members are already in the casted in site, casted in shop. So Acha, okay, it's okay. Let's leave that. In Madhya Pradesh, generally, what type of soil is there or rocky? Most of the area is with rock or with soil? yes, sir. Hilly area is also there. Basically, if we talk about my region, then its soil is alluvial soil, but it is surrounded by hilly area. Most of the area is rocky. Madhya Pradesh, if you compare area wise, how much area is rocky? How much area is not rocky? You have any idea? No, sir, I have not an idea of exact that. But Malwa region is Gondwana rock, and in that region, Gwalior region is plain region, but it is surrounded by all over hilly area, so the flood does not occur there. What is rock mechanics? Sir, rock mechanics, it's the study of rocks, the type formation and classification of rocks. What is the difference between rock mechanics and engineering rock mechanics? No, sir, I have no idea of that. Yes. So, very good. आप बताइए कैसा रहा इंटरव्यू आपका? Just above than average. Average, sir, good. एवरेज की Sir, गुड? above than average, good. अबव देन एवरेज Yes. गुड? तो गुड था आपका? Yes, sir. तो गुड से तो काम चल जाएगा, वो तो वेरी गुड और एक्सीलेंट चाहिए ना? Yes, sir. तो आपको लगा कुछ कमी है कहीं पे? Yes, sir. कहाँ? सर थोड़ा सा आंसर्स में सर फास्ट रिप्लाई आ रहा है और एंड सर आई कांटेक्ट सर और well we find you very good candidate, Mr. Madan. यस सर. इसमें कोई शक नहीं है कि यू आर वेरी गुड कैंडिडेट. लेकिन अब ये है कि एवरीबॉडी इज वेरी गुड हु कम्स हियर. यस सर. तो यू हैव टू, ओलंपिक में आप जानते हैं यस जो रेस जीतता है उसका खाली नाक ही आगे होता है. यस सर. अंडरस्टैंड? Yes. बड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. यस उसके लिए थोड़ा आपको और मेहनत की जरूरत है भाई. यस वो जो है अब उसमें द फ्यू थिंग्स व्हिच वी हैव नोटिस्ड. यस. एक तो आपको थोड़ा कम्युनिकेशन, आपने कहा बिलोंग्स टू, तो आइए बिलोंग्स टू नहीं होता ना, बिलोंग टू होता है. छोटी छोटी बात है कम्युनिकेशन. आपकी शर्ट अच्छी नहीं है, टाई बहुत लंबी है आपकी. टाई जो नॉट है ये यहाँ तक होनी चाहिए हमेशा. ओके. बेटर. ओके सर. और कोट का बटन बंद होना चाहिए ऊपर वाला अंदर घुसते हुए, और फिर बैठते वक्त खोल देना उसको. ओके सर. आपका बैठने के बाद सब बैठने का नहीं, मतलब खड़े होके ही खोल दे. बटन खोल के बैठिए आराम से, और ऐसे बैठिएगा जैसे बताया, ओके सर. सो दैट यू रिलैक्स. आप बोलते बहुत तेज हैं, फास्ट हैं, आपने खुद ही कहा. तो कई बार समझ में नहीं आता कि आप क्या कह रहे हैं, आपका नुकसान हो जाएगा. आदत डालिए धीरे बोलने की. सर साउंड थोड़ा आवाज स्लो. स्पीड स्पीड स्पीच की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पीड. यस सर. तो अपनी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करिए. ओके सर. जो आप यूज ऑफ हैंड्स है आपका, यस सर. यूज करिए, बट आप टेबल के ऊपर मत हैंड्स यूज करिए. यस ओके. आप ऐसे ऐसे कर रहे थे. ओके सर.
करो, लेकिन टेबल के नीचे हाथ रखे करो। ओके जनरल नॉलेज ऑफ कोर्स आपकी अच्छी है, आई कांटेक्ट आपने खुद ही कहा कि होना चाहिए, लेकिन आप बड़ी जवाब देने की बड़ी जल्दी में, सवाल खत्म होता नहीं कि आप शुरू हो जाते हैं। Yes. Don't do that. Tomorrow, when you join the government also, even if you don't join, so you have to be a thinker also. You don't have to only just execute. कि बन गया, बना डिजाइन है, बना दिया, भी चलो। Yes. फैक्ट्री नहीं है ना, आप लोगों का काम फैक्ट्री की तरह तो नहीं है। Yes, sir. You will have to give inputs to the architect. You will have to give inputs to the owner of the house also. Yes. You will have to supervise at various stages. और तरह की बड़े तरह की मैग्नेटिक लाइंस और क्या क्या Yes, sir. बड़ी बड़ी और चीजें होती हैं जो Yes. there are 8-9 things which are considered while constructing a house or a building. It should be green building, for example, आज ये कहते हैं। Yes, sir. ये उसको नेचर में उसको मर्ज होना चाहिए उसको। Yes, sir. Environment friendly, sir. Yeah. So to cut it short, Okay, sir. सोच के जवाब दीजिए, Okay, sir. आपका हो जाएगा। You are a very good candidate. Have another mock after some time Okay, sir. with all these improvements. Okay, sir. मेरा भी ये कहना था कि जो जवाब आप क्वेश्चन करने में जो इमीडिएट रिप्लाई देते Yes, sir. Immediate reply. हैं, वो मेरे को लगा कि आपको जो है थोड़ा ये लगना चाहिए हमको कि हमारी बात आपने ढंग से सुन ली है और समझ ली है और सोचा है, फिर जवाब दिया है। ये नहीं कि बस एकदम जैसे किसी ने बता दिया था और जवाब आपने यहाँ दे दिया। Yes, sir. तो ऑफ कोर्स यू आर स्मार्ट पर्सन, नो प्रॉब्लम, Okay, sir. बट हमेशा प्रिटेंड यही करना है, अगर नहीं कर पा रहे Yes, sir. तब भी करना है, Okay, sir. राइट? Yes, sir. ये जरा विशेष है। Yes, sir. सर 5-10 सेकंड का पॉज लेके हम आंसर दें। जो भी आप Yes, sir. हमको ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बात कर रहे हैं, Yes, sir. अभी आप सुने, फिर आप जवाब दे दीजिए। अब जब तक ऐसा लगे जल्दी जल्दी जवाब देना, Yes, ऐसा sir. नहीं फील होना चाहिए। Okay. इंटरव्यूअर को अच्छा लगता है कि उन्होंने समझ लिया है, समझ लिया Yes, है। okay, sir. और जैसे टर्नआउट में वैसे तो ठीक ही है, Yes, sir. सबने बताया। Yes, sir. एंटर करेंगे, Yes, sir. अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सब लोग यही मिस्टेक कर रहे हैं। Okay. एंटर करेंगे तो ऊपर का बटन ये यहाँ का बंद होना चाहिए, Okay. ये वाला, ठीक है। और जब बैठने से पहले खोल देंगे, क्योंकि इसमें दिक्कत होगी बैठने में, जब बटन लगा रहेगा तो Yes, sir. दिक्कत होगी बैठने Yes, sir. में। बैठने से पहले खोल लेने का, फिर बैठने का। Okay, sir. टेबल पर कोई हाथों के मूवमेंट नहीं होने। अच्छा, कोई क्वेश्चन जैसे टेक्निकल पूछते हैं, मान लो कुछ भी, Yes, sir. तो पेपर पलट सकते हैं आप इसका, डायरी का। Yes, sir. ये एक और अच्छी बात है। Yes, sir. इन्होंने कोई चीज पूछ ली Yes, sir. कि रिटेनिंग वॉल में ऐसा होता है, Yes, तो sir. आप जस्ट टू गिव ए पॉज टू थिंग्स, Okay. सुना आपने और रिटेनिंग वॉल बनाई, उसमें बीप होल्स बनाए, तो बताया सर ऐसे ड्रेनेज का सिस्टम होता है। अच्छा, तो इट विल गिव यू पॉज एंड इनको लगेगा कि आप उस अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अच्छा, okay. नहीं समझे, जैसे Yes, आपने कहा सिंपली सपोर्टेड बीम, Yes, sir. तो आपने खड़ से 2 सपोर्ट बनाए, एक बीम बनाया, उसका डिफ्लेक्शन लगाया, Yes, sir. फिर आपने उसका ढंग से समझा उसको, Okay. तो ऐसा फील आएगा हमको कि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, Okay. इंटरव्यूअर को Okay. इंप्रेशन शेव अच्छा वगैरह होगा। करके जाएंगे ना, हाँ, सर. तो अभी से शेव वेव करिए। नेक्स्ट मॉक जब आप करेंगे प्रॉपर्ली, Okay. और दरवाजा घुसते वक्त हल्का सा खोल के नॉक करना 3 बार। मे आई कम इन सर पूछना है, Okay, sir. Knock करना है. नॉक 3 बार। Okay. ये मे आई कम इन सर Okay, sir. कहेंगे, एक्चुअली कम इन, कुर्सी के पास खड़े हो जाइए, अपने आप मत बैठिएगा हाँ, till कम they से मत ask बैठिए till अपने। they ask you to sit down। Yes, sir. So I did the same mistake in my last mock. I came and that's it. So at the end, the faculty said that you Yeah. don't have to sit; you have to stand So aside. you then also while going also you have to stand and Yes, sir. fix up your button and all। हाँ जी, just अभिनव। ठीक है मदन, बस एक मेरा रिकमेंडेशन है कि आपकी सॉक्स वाइट है, Okay. तो वहाँ पर बोर्ड थोड़ा ये बड़ा रहेगा, इसका विड्थ ज़्यादा रहेगा। हो सकता है आपके सॉक्स ना दिखे, पर जब आप एंटर कर रहे हैं उस समय दिख जाए, तो बेटर है कि वो पैंट से थोड़ा मैचिंग करते Yes, sir. हुए Yes, sir. ब्लैक या नेवी ब्लू आप Okay, पहन लें। sir. Okay. Yes, I purchased black to miss single. हाँ, तो वो पहन लें तो कोट यही पहनेंगे Yes, sir. Yes, sir. और टाई यही बांधेंगे। Sir, yes, sir. I want to ask about tie. Ki that should I चेंज करिए, टाई change चेंज it? करिए, Okay. प्लेन टाई ले लीजिए Okay. कोई, Okay. और थोड़ा और डार्किश ले लीजिए। Darkish ये कौन सा कलर है, ब्राउन है आपके सूट का? Sir, black. हाँ, तो ये तो ब्राउनिश लग रही है टाई जो आपकी। Yes, sir. Tie is brown, sir. हाँ, तो नहीं, फिर रेड डाल लो, Red, कंट्रास्ट red, होगा, red, red. लाइट रेड कर लो, कुछ ऐसा कर लो। Okay. ठीक है। शर्ट का जो कॉलर है ना, ये शर्ट बुरी हालत बहुत में बुरी हालत में है तुम्हारी। शर्ट नहीं ले लेना। सर हमेशा शर्ट थोड़ी बोलो जिसकी ठीक से कॉलर हो। Yes.
हाँ सलवटें पड़ी हैं बहुत ज्यादा। देखो यहाँ देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर सिल्वर है, सलवटें नहीं होनी चाहिए, कॉलर में सिल्वर है, कॉलरों में सलवट। हमारा कलर देखो, अपना कलर। हमारा कॉलर देख लो, हाँ सलवटें नहीं होनी सर चाहिए, का कॉलर देख लो। सलवटें नहीं होनी इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ। ओके चाहिए। कभी भी कॉलर में सलवटें नहीं होनी चाहिए, कप में सलवटें। तो उसका कपड़ा ऐसा कि वो आप सही कह रहे हैं। नहीं वो लेना ही है आगे शर्ट, बता रहे इंटरव्यू हो। के टाइम में ऐसी शर्ट लेनी है, रेडीमेड लेनी। रेडीमेड। इससे वो सिलवाया हुआ तो आप कपड़ा afford- ऐसा कि वो हो आप जाता afford से कर- बाहर के लिए। आप अफोर्ड कर सकते हैं एक शर्ट खरीदना? है। यस सर, हाँ? यस सर। गुप्ता जी हैं ये तो। ये नहीं, I'm just asking, ये कई चीजें लोग- इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले लीजिए। ओके। हाँ जी, अब हो गया आपका? हो गया आपको? चलिए। नहीं, आपका सब बढ़िया था, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, यू हैव डन वेरी वेल। ये आरसीसी स्ट्रक्चर में जो मेनली क्रैक पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ कम होती है, लाइफ उसकी ड्यूरेबिलिटी अगर हमें बढ़ानी है 200 साल के लिए, 250 साल के लिए करना है, ड्यूरेबिलिटी के लिए अलग साइंस है, अलग सिविल इंजीनियरिंग, उसमें ये है हाउ टू कंट्रोल द क्रैक्स, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था Do ये you आपने have बता any- नहीं पाए थे कि आरसीसी वर्सेस पीएफसी में बताया तो उसकी पीएससी में क्रैक होते नहीं है, Yes, हाँ ये है ऑलरेडी ऑलवेज अंडर। यस सर, इट्स ऑलरेडी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इट्स ऑलरेडी अंडर ये टेंशन। पेट सब्जेक्ट है कि आपको सिविल इंजीनियर अगर आप हैं तो आप कैलकुलेशन अलग रखिए, आपको फील आना चाहिए फील भाई आरसीसी में तो यार क्रैक्स हो जाते हैं, इसमें पानी घुस जाएगा, यस सर, एयर घुस जाएगी, पॉल्यूशन घुस जाएगा। पीएससी में क्या होता है, नॉट द प्रीकास्ट और दैट, मेन चीज है वो कंप्रेशन में रहता है ना वायर, यस सर, क्रैक होने नहीं देता, दैट इज द साइंस ऑफ पीएससी। यस सर, टू अवॉइड द टेंशन वी ऑलरेडी प्रोवाइड द कंप्रेशन इन टेंशन। हाँ। यस तो वो तो आप कह रहे हैं उस वजह से टेंशन और उसकी वजह से, वो तो साइंस अलग है, सर, लेकिन मेन चीज क्रैक्स खत्म। ओके यस सर, मेन चीज तो ये किसी चीज में क्रैक होगा, कोई चीज क्रैक होगी, उसके अंदर तो कुछ ना कुछ एंटर करेगा, कुछ स्पॉइल करेगा उसको। आरसीसी में ये इनहेरेंट डिफेक्ट है, ये उस पर क्रैक्स हो जाते हैं, तभी तो टेंशन आता है उसमें। कोई सवाल पूछना आपको? एनीथिंग मोर यू वांट टू नो फ्रॉम एनी वन ऑफ अस? यस सर। सर वही वो ड्यूरेबिलिटी वाला था सर, जो अभी सर ड्यूरेबिलिटी। हाँ, उसमें ड्यूरेबिलिटी में वो बीटेक के बाद पढ़ाते हैं और सबको भी नहीं पढ़ाते, वो उससे आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट बेसिकली उसमें यही है कि हाउ टू इम्प्रूव द क्रैक वेट। क्रैक विड्थ क्रैक वेट जितनी कम रहे उतना अच्छा उतना है। अच्छा है, ये मान के चलो हाँ। बिहेवियर वाइज क्रैक विड्थ और फिर मटेरियल की लाइफ कैसे बढ़ाएं, आपने बताया था सीमेंट बढ़िया Yes, sir. हो, स्टील पे आप वो सब कोटिंग वोटिंग कर सकते हैं, सर, तो जो तो उसके लिए कोड है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए देयर इज ए कोड, 200-250 साल बढ़ाने के लिए देयर इज ए कोड, आईएस कोड है। ठीक, चल और कुछ? नो सर, इनके सर आपने हॉबीज तो बड़ी जबरदस्त लिखी है, देखा था आपने? हॉबीज पे क्वेश्चन पूछा है? हाँ बहुत ही जबरदस्त हॉबी लिखी है। यस सर, कुकिंग इज इतनी कुकिंग ज्यादा हॉबी आप लिखो मैंने मत, मेडिटेशन तीन है। हाँ मेरे रुक जाता आपने, इतनी right. ज्यादा हॉबी आप फंस जाओगे किसी ना किसी में, जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता हो उसके बारे में हॉबी लिखिए आप। हाँ ये अब बताइए तो अब तो क्या? सबमिट हो गया यस है। सर, ऑलरेडी हो गया। सबमिटेड। हाँ। अब तो कुकिंग में तो क्या कुकिंग के बारे में आपको आना चाहिए, मेडिटेशन। कुकिंग हॉबी है आपकी? मुझे बताइए कॉन्टिनेंटल फूड क्या होता है? Sir, I am not a professional chef, but I do sometimes cooking. दाल सब्जी तो बनाने से, दाल चावल बनाने से कुकिंग हॉबी नहीं हो जाती बेटा, वो तो लोग मजबूरी में बनाते हैं अपने खाने के लिए। बड़ा गलत लिख दिया। कुकिंग के बारे में अच्छी तरह जान लो। यूरोपियन फूड क्या है, थाई फूड क्या है, उसके रेसिपी हो गया ये हॉबी, तब तो जान ये सारा कुछ जानकारी अच्छी तरह रखो। हाँ, वर्क हार्ड ऑन दिस। क्रिकेट इज आल्सो वेरी वास्ट फील्ड। Yes sir. अब यही हम पूछते हैं, आप बताइए T20 कब शुरू हुआ था? Sir, 2007 was the first World Cup of T20. अरे मैं कह रहा हूँ शुरू कब हुआ था, आप कह रहे हैं कि आप जल्दी में आप बता रहे हैं वर्ल्ड कप। मैं वर्ल्ड कप नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने पूछा T20 कब शुरू हुआ था। सुनो ना बेटा। Sir, no, I don't. हाँ तो फिर जवाब मत दो ना, लिसन। आप यू नीड टू लिसन ऑल्सो। और कुछ? थैंक यू।